आगे। Yes, we are live now. Hello everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. We are live now. Good evening. Hello everyone. Welcome to Read My Story discussion forum. Today we are here to discuss about our most important topic because we had a disability international disability day yesterday. So on the same note, we are discussing today about the same thing, like how we can create something better for the benefit of all, especially the disabled people. So on to that note, we are having a discussion forum today, and today with me is Amarjit Singh Anand sir and Preeti Singh ma'am. So today they would be sharing their expert advices about the act, how it is impacting the life of many people. So let us welcome them. Welcome Amarjit sir and welcome Preeti ma'am. So I'll brief Thank Thank about you, Jitinder. both of you first. Welcome, sir, and I'll brief you about both of you so that we can have a discussion further. So, Amarjit sir is a state disability activist, expert member, State Advisory Board, ex-member CWC Jalandhar, and now member of JJB Jalandhar. So, sir, please share few more details about yourself so that we would be able to know your background, how you started, what all you are doing in this sector. Sure. Uh, in 1996, I was blessed with a daughter, and my daughter is Down syndrome. And, when she was born, uh, it was like, what has we done bad that why is we have got this daughter? सो एक बार तो जब बच्चा पैदा हुआ और जब हमको पता लगा कि हमारा बच्चा स्पेशल है, हमारे पैरों के तले से जमीन निकल गई कि हमने ऐसा क्या किया कि हमको ये सब सामने जिंदगी में इसके साथ जीना पड़ेगा. बट अल्टीमेटली अ डॉक्टर, ENT स्पेशलिस्ट सेड टोल्ड मी कि आनंद जी, आप ब्लेस्ड फादर हो, आपको ऐसे नहीं, ईश्वर ने आपको बच्चा दिया है क्योंकि ईश्वर को ही मालूम है कि आप इसकी सेवा कर सकते हो, आप इसका पैदाइश के बाद इसका फ्यूचर आपने ऐसा बनाना है कि एक मिसाल बनेंगे आप. तो मेरे को वो डॉक्टर की बात जहन में रख ली और मैंने अपना, यू कैन से, युद्ध, बिकॉज जिंदगी में कभी कुछ नहीं मालूम था कि कैसे करना है. तो वहाँ से वो मेरी शुरुआत हुई और उसके बाद मैं परिवार, एक फोरम है पेरेंट्स का जिसको नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट एसोसिएशन कहते हैं. ये वर्ल्ड का बिगेस्ट पेरेंट्स प्लेटफॉर्म है. वी हैव in all the states and union territories we have parent associations and they are member of parivar. Most of the districts also have parent association. So I started this movement, parent association, in North India, from Delhi, Himachal, UP, Uttarakhand, then Haryana, Punjab, J&K, and with Parivar's support, organized number of regional parents meets. एक अगर पंजाब में हो रही है तो पंजाब में की डिस्ट्रिक्ट के भी पेरेंट्स और अदर. सर म्यूट हो गया आपका.
Okay. Sorry, sorry. जी जी. Uh, so, number of parent associations were formed, and as a member, my activities and my work seen by the executive, then executive of the uh, Parivar, I think 1999, 2001 or something like that. No, 2003 and onwards. So I was made one of the uh, regional member in the executive body. And for 9 years, I was vice president of North Zone of Parivar. So with that, I started working, and one in one of the roundtable conferences of the census, I met Mr. Javed Abidi from NCPRD. So he was kind enough. He was like a mentor to me. He told me, Anandji, you are doing a lot of things in Punjab for the intellectual disability. Why don't you do it for everyone? So with that, I started for the cross disability. This is how I began and how things were moved. Great, sir. That's great to hear about you. And now about ma'am. Ma'am is active on various platforms. She has accomplished consultant with 15 years of experience and has impacted many life of more than 1500 plus learners through her experimental workshops. She has been instrumental in diversity and inclusion initiatives in organizations and conducted sanitization programs for promoting inclusivity and through process and value in organization. So ma'am would also be sharing few more details about her. Ma'am, please welcome and share something about yourself as well, like how you got into this thing. Thank you, Jitendra. Thank you, sir, for bringing me here on this platform. Read my story. It's a wonderful platform where we all share our views and we understand from each other that how life has been shaping up and helping us to grow more maturely. And today, the way Jitendra said that it was yesterday, 3rd of December, was Disability Day. It was celebrated. And it's not only one day that we celebrate disability every day. I celebrate disability every day, and my celebration has taken me for has started about 23 years back. As Amarjit Singh sir said that he's a parent, and that's my biggest identity as well, that I am a parent of a young man who is 24 years old today. And he's my main introduction into the field of disability. And the way most of the parents undergo the hiccups, the first contact with disability, it really gives a big shock, that saying कि ये मेरे साथ क्या हो गया, जैसे अभी सर ने भी बताया कि एकदम से यही आता है, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये कैसे. And how are I'm talking about 24 years back, tab to disability used to be a kind of a taboo, where people used to think अच्छा ये तो ना भगवान का कुछ punishment है इनको जो मिल गई. Gradually we all grow, we all mature up, and I have grown as a person. I would say that my son has been a true mentor to me because he has shaped my personality. The way I look into many different things today is so different to what I used to see earlier. So my main introduction goes as a parent, that I'm a proud parent. And because of this sector, I have been working very closely. I run an NGO as well on disability, in which we try to empower young adults who can, who can at least live a life with dignity. So, having said them, when we take employment, we talk about employment, how to actually seamlessly take these young adults and adjust them in the different organization is where I bridge in the gap.
And so my profession takes me to be a diversity and inclusion consultant with different organizations. Of course, once a trainer is always a trainer. Given any topic, it's all about delivering then. So that is my brief introduction. That's great. Great to great to hear, ma'am. Great to hear, sir, about you as well. And it was wonderful having you both on the platform. So let's talk about what our topic for the day is. And as we had Disability Day yesterday, so our thought to discuss about today is how we can fuel an accessible and equitable world for people with disability. So on to it further. So फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इज ऑल अबाउट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट. ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 क्या है और ये किस तरह से शुरू हुआ? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2007 में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह had signed a pact with the United Nations Convention for People with Disability. And after signing that pact, it was expected that we will be having a universal law throughout the universe. But unfortunate that our system is so slow, or to get a bill ratified in the parliament is not a baby feeding job. So lot of struggle was there for continuous 9, 10 years. There were hundreds of meetings across the country, and after starting the process from the UNCRPD uh, framework. And I'm audible? Yes, Yes, yes. sir, very much. Okay. And this work was entrusted to make the law was entrusted to Nalsa University, Hyderabad, and Dr. Amita Dhanda and her team prepared the entire act, and the process took 9 years. And this is the only bill which the House of both the parliaments was passed without any, not a uh, unopposed. Okay, That was the beauty of this bill or act, that we got the law without any uh, from the opposition or any of the ruling parties rejecting, or and within 3 years it was expected to be uh, that all the states will be uh, getting their own state policies covered under the law. right, So with this, like uh, there was one special courts were to be established. State disability commissioners were to be appointed, and state policies for transport, for disability, for education, for medical, all the ministries having their own state policies, sports policies. So this was the part of the state governments to be carried out. So this is the way that it was to be implemented. right, sir. So it took a very long time. 9 years was really huge. Right. So, ma'am, from you, like as the idea came
came from you only. तो जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी, आफ्टर डिस्कसिंग विद यू, आफ्टर डिस्कसिंग विद सर, आई ट्राई टू गूगल इट आउट कि ये है क्या, मतलब इसके बारे में। तो जब मैंने ढूंढना शुरू किया तब तो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। बट अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो की बात करूं, तो एज एन जर्नल पब्लिक, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो इसी चीज को लेके मेरा क्वेश्चन आपसे है, as a parent of a special child, you go to multiple events, you speak to many parents. So what is your feedback onto it कि किस कितना लेवल तक ये इम्प्लीमेंट हुआ, किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, क्या इसका बेनिफिट लोगों तक जा रहा है, और क्या अवेयरनेस इस चीज के बारे में लोगों तक है? Jitendra, it's a very nice question that you have asked. Yes, as I'll be speaking from a parent's perspective entirely. जब ये चीज मुझ पर आई, तो आई हैड नो आइडिया दैट व्हाट डिसेबिलिटी इज, व्हाट डिसेबिलिटी एक्ट इज, so what policies are there. If I have to tell you that there are policies, there are acts, I really didn't know, because as a parent, the only motive of any parent is at that point of time कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, किसी भी तरीके से कोई भी डॉक्टर उसको बस ठीक कर दे और वो अपनी एक आम जिंदगी जीना शुरू कर दे. Until unless all this comes and starts to actually sit in a parent's mind when the child is growing over the years, say after 15 years onwards. So that is when every parent starts to think, oh, there is a disability certificate. अच्छा, ये एक एक्ट भी बना हुआ है. हमें पहले कुछ नहीं पता होता. सो अवेयरनेस की अगर हम बात करें, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक, तो कुछ अवेयरनेस नहीं थी तब तो. मतलब थी लोगों में, बट इट वाज लाइक सीन. अब जाके अगर आप बाजार जा रहे हो, अपने बच्चे को लेके जा रहे हो, यू कैन बी लिटिल कॉन्फिडेंटली, यू कैन मूव अराउंड. यू नो दैट टाइम इट यूज्ड टू बी, वी यूज्ड टू हाइड आवर चिल्ड्रन कि कोई देख के ये, बिकॉज एक टैबू था ना, एक नाम दे देते थे कि ये तो यू नो पागल है, इसको समझ नहीं है, ऐसे ऐसे करके बातें बोल देते थे. करेक्ट. तो हमें इतना वो एक्ट के बारे में नहीं पता था. यस, नाउ there is so much awareness. If I say the new parents who are in this space, they are aware. They know which doctor to go, what is the RPWD Act, they know what policies are there, because over the years the awareness has come, somewhere it has developed. And who has been instrument are the old parents who have been actually sharing their life story, life achievements, I will say, because we all are achievers in this space. तो वो करेक्ट. हम लोग को पास ऑन करते रहे हैं. सो एज अ करेक्ट. पेरेंट ज्यादा हमने कभी ध्यान नहीं दिया इन एक्ट्स के बारे में. दैट्स रियली वंडरफुल. और जैसे कि अभी आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ओल्ड पेरेंट्स, जैसे सर भी एक पेरेंट है जिन्होंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की हैं. You have also faced these type of challenges in your life, and I have spoken to some more people as well. So they also face similar kind of challenges, and they try to connect with people who have similar experiences, और वो experiences share होते होते चीजें आगे बढ़ी हैं. But the role of people who are activist onto these kind of things, उनका रोल भी काफी अहम है. जैसे सर काफी टाइम से इस एक्टिविटी में है, काफी अवेयरनेस और एक्टिविटीज कर रहे हैं, और सर के जैसे और भी कई लोग हैं जो काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, एंड यू आर ऑल्सो डूइंग दीज टाइप ऑफ इवेंट्स. सो ये काफी अच्छी चीज है जो लोगों को हेल्प कर रही है. सो नेक्स्ट थिंग ऑन टू इट, जैसे कि ये एक्ट है RPWD, राइट टू पीपल विद डिसेबिलिटी, तो इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज कवर्ड हैं इस एक्ट के अंडर? सर थोड़ा सा इसके बारे में भी ब्रीफ आउट कर दीजिए, सो दैट पीपल वुड बी अवेयर ऑफ कि ये चीजें कवर्ड है. Earlier, when PWD Act 1995 was there, हमारे पास 7 types of disabilities थी. And with this new act, we have disabilities of 21 types. So almost all the disabilities are covered. Even leprosy is covered, which is vanishing or more or less vanished. But still, to keep it on record, it is there. Even
acid thrown victim or acid victim is also covered in the disability. All types of blood infections or diseases are covered. So it's a vast list of 21 types of disabilities. In other countries, with this act, though they have different names, even old age is a disability, which is Okay. not here in India, but otherwise they have it in the act. Right, right. So, disability coverage is concerned, almost all types of disabilities are in the act. Correct. Because जैसे आपने बताया ओल्ड एज इज ऑल्सो कंसिडर्ड डिसेबिलिटी इन मैनी कंट्रीज वो होना भी चाहिए बिकॉज एट सर्टेन एज 60s to 70s के बीच में फिर भी वी कैन सी कि पीपल आर वर्किंग बट बियॉन्ड 70 कैपेसिटी जो है बहुत कम हो जाती है और उतना काम नहीं कर पाते चलना फिरना कम हो जाता है तो दैट इज ऑल्सो टाइम व्हेन पीपल नीड बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली फ्रॉम गवर्नमेंट और कुछ ना Yeah, कुछ बेनिफिट्स दूसरे तरह के भी होने चाहिए right. दैट्स राइटली पॉइंटेड आउट तो मैम आपका क्या इस व्यू है इन चीजों को लेके इसके साथ मैं सर के साथ ही एक और ऐड करती हूँ इवन सर blood related conditions are also covered in this disability. Like Yeah, thalassemia and all these. Yeah, Hanji, right, sickle cell disease, they are also covered under these right. disabilities. So from Yeah. 7 to 21, पहले 7 ही होते थे, अब तो बहुत हो गए हैं. And there is a reason for this. It is right not that one has to see the word disability per se. See that it is making life easier for them. Just to give them a little more, concern that people show, that's the reason they have given them as a word called disability. Yesterday, I okay Because had been to one of the state functions uh, for the International Day for Disability. I was showing my wife that just see the people. A person, एक बोना भी डिसेबिलिटी में आता है. A dwarfism. crippled person, okay a spinal cord injury person, because there was a big camp for distribution of aids and appliances for the disabled. So जिसने ये दुनिया नहीं देखी है ना, वो अगर वहां पर आके देख लेना, तो उसको पता लगता है कि ईश्वर की क्या क्या रहमो करम है लोगों के ऊपर. हम ये जब तक हम खुद उनमें जाके मिलते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, हमको नहीं समझ आएगी कि डिसेबिलिटीज क्या है. correct तो लाइक पीपल से, अगर किसी ने ईश्वर को देखना है तो अस्पताल में जाके देख ले. किसी बीमार लोगों के बीच में थोड़ी देर घूम के देख ले. सो जी सेम इज डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी को अगर देखना है, नजदीक से देखना है, तो दीज टाइप्स ऑफ कैंप्स आर. आई हैड बीन टू उदयपुर, नारायण संस्था के वहां पर उदयपुर गया था, तो मैं वहां देखने चला गया. तो tremendous types of people having बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की सर्जरीज एंड आर्टिफिशियल लिम्स. सो दिस इज रियल स्टोरी ऑन द ग्राउंड. करेक्ट तो मैम सर एक क्वेश्चन और है मेरा फॉर एन क्यूरियोसिटी पर्सपेक्टिव जैसे डिसेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाय बर्थ डिसेबिलिटीज रहती हैं अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे और तरह की डिसेबिलिटी भी बाद में ग्रो हो जाती है कई बारी जैसे पोलियो फॉर एन इंस्टांस जब बच्चा पैदा होता है वो होस्ट पुस्ट रहता है फिर पोलियो सही दवा ना मिलने की वजह से हो सकता है सेम वे कुछ और तरह की डिसीज वगैरह जैसे हो गए बॉडी में उसकी वजह से या माल न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉपर पौष्टिक खाना ना मिलने की वजह से भी कई बार डिसेबिलिटी आती है तो आर दीज ऑल्सो कवर्ड अंडर द एक्ट इसके में भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अप्लाई होती है जी हाँ, बिकॉज ग्रेट डिसेबिलिटी विद बर्थ और विद मेडिकल इश्यूज
are all covered. Right. हाँ, we normally start to think ना कि अच्छा disability तो मतलब एक birth time ही होता है, उसके आगे तो कभी कुछ हो नहीं सकता. But Correct. you never know, anything can happen, anybody can be, for example, Alzheimer is also part of being mental health. So that I mean, that comes with the age. So this can hit anybody at any point of time during the lifespan. Correct. same is mental illness. Mental illness, Yes. Yes, mental health. intellectual disability is with birth. Mental Yeah, illness is later, and mental illness is curable, that's right. Right. and That's Right. even that is also included in the, and that is disability. something good uh, on the part of the act. Right. That's great, sir. So, if we talk about policies, major policies under the act, what are these major policies? जो uh, main items है जो everybody should be aware of. तो वो क्या चीज है? See, the government of India has given us the act, and it is the state governments who have to implement the act. For implementation of the act, each state is to have its own policies. Like sports, they should have their sports policy for the disability. In case it is transport, they should have their own policy for the education, medical, empowerment, accessibility, all these, whatever, see, a state has got ministries, all ministries should have their own state policy. Simple funda. Right. हमने बाहर से कुछ नहीं मांगना है. आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो, इवन आई टेल यू, देयर इज सम इशू. ओके, No? सही है ओके, सर. हाँ, सॉरी. हमारे पास जितने सरकार, जितने भी सरकार के महकमे हैं, उन सब में डिसेबिलिटी की पॉलिसी होनी चाहिए. लोकल Right. गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स, मॉल्स, हर जगह एसेसिबिलिटी का काम लोकल गवर्नमेंट का है. ट्रांसपोर्ट का है तो ट्रांसपोर्ट ने हमको लोअर फ्लोर बसेस देनी है, Right. एसेसिबल बस स्टैंड्स देने हैं. अगर बस में हम चढ़ ही नहीं पाएंगे तो हमारे उस बस का क्या फायदा है उस डिसेबल के लिए. when the UN when I was going through the UNCRPD book earlier in 2007-8, it was mentioned there that each ministry or the state government's entire funds 2% should be reserved for the uh, financial budget of the for the disability for at least the time the entire thing is implementable. So उतना तो मेरे को नहीं लगता कि कभी भी, भले वो सेंटर की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, 2% तो ये लोग रखने के नहीं हैं. ये अगर 1% भी रख देते हैं तो एटलीस्ट वी हैव अ time frame target that we will be able to achieve the implementation part of the act. So far हमारे यहाँ तो इतना डिस्क्रिमिनेशन है एक्ट के अंदर कि एक स्टेट में 300 रुपया सोशल सिक्योरिटी पेंशन है फॉर द डिसेबल और एक सरकार 3000 रुपया दे रही है सोशल सिक्योरिटी. सो there should not be a discrimination. The central government should also ensure that the states also don't make such uh, एक मजाक नहीं बनाए हमारे डिसेबल कम्युनिटी का. Correct. There should be, I think, centrally driven policy for this. राइट, राइट. Right. that is why that is why beyond the act
उन्होंने हमको एक सेंट्रल में चीफ डिसेबिलिटी कमिश्नर दे दिया, सीसीपीडी, correct. चीफ कमिश्नर फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, और स्टेट में भी दे दिया। बट हमारे यहाँ कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जहां उन्होंने डिसेबिलिटी कमिश्नर लगाने के बजाय ब्यूरोक्रेट्स को ही, आईएएस ऑफिसर्स को ही उसका कमिश्नर बना दिया। अब उस आईएएस अफसर के पास 5-5, 6-6 महकमे, 4-4 महकमे दे दिए हैं, वो क्या जस्टिफाई करता है कि वो हमारे लिए काम करेगा? Not possible. सो दिस शुड बी ऑल्सो विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कि नहीं, आपको हम इतना टाइम, इवन सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन इसकी वो लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अच्छा नहीं माना है, और उन्होंने एक टाइम दिया था, मेरा ख्याल अक्टूबर 22, सॉरी अक्टूबर 21, कि आप सब जगह डिसेबिलिटी कमिश्नर लगाएंगे, और सबसे बोला था सब स्टेट्स को कि आप एफिडेविट दे दो। इन्होंने एफिडेविट देने के बाद भी नहीं लगाए। सो दैट इज अ Right. ब्रीच ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इंस्ट्रक्शन। Instructions, rulings, yeah. Correct, correct. सो मैम, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को अब 6 साल हो चुके हैं। सो आपका क्या व्यू है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं आज की डेट में? 2016 से आज तक तो मतलब yes, we have been working. I will not say that there have not been any movement. People have not worked towards it. People have worked. Parents like me, we have got aware about the whole process. But there is lots to be done, because the way sir was just mentioning कि एक्ट के अंदर तो इतनी पॉलिसीज बनी हुई हैं, इतना कुछ लिखा हुआ है, इतनी भारी भरकम किताब लिख ली है, शब्द भरे हुए हैं, लेकिन उनको Implementation. इम्प्लीमेंट करना इज अ चैलेंज, इज अ वेरी बिग Right. चैलेंज। मतलब स्टेट वाइज अगर देखो, गवर्नमेंट की हम बात करें वो तो एक इट्स अ बिग bucket, उसके अंदर हम स्टेट की बात करें, the states are also not playing their roles. They are not able to so what is this Rights of People with Disability Act 2016? Yes, so this is the book This is a book. which we all parents should read. But क्या होता है, when we will read this, हम अवेयर हो जाएंगे, बट व्हेन, यस यू सेड इट राइट जितेंद्र, इम्प्लीमेंट की बात आती है ना, वहां पे हमें वो ट्रस्ट हमारा टूटता है कि इम्प्लीमेंट तो कुछ हो नहीं Correct. रहा। as small as getting a disability certificate, it's a huge challenge, it's a very big challenge। और बहुत अच्छे से पॉलिसी में लिखा है that we can we will make it possible if the child is not able to go to the hospital, we will make sure that the doctor can visit the home। ये सब बहुत बढ़िया से लिखी हुई, these are very flowery languages, correct me sir if I'm wrong, but वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ground reality But कहाँ? when it comes to implementing reality, वो चीज कहीं दिखाई नहीं देती। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, पेरेंट्स लाइक मी, वी गो यहाँ पे, आई स्टे इन गुड़गांव, हमें बताया जाता है देयर इज वन हॉस्पिटल व्हिच इज 2 hours अवे। इमेजिन करो, जिन बच्चों को आप, फॉर एग्जाम्पल, हु इज ऑटिस्टिक चाइल्ड, ही कैन नॉट सिट फॉर मोर देन फॉर 5 minutes or 10 minutes or half an hour at one place, you expect him to sit in the hospital for such a long time? How can you And expect? waiting period is also huge। मतलब वहां जाने के बाद Huge, भी पता लाइन ही में नहीं है, लगो, पता ही नहीं फिर है, उसके बाद आपका नंबर कब आएगा, यू नेवर नो। यू नेवर नो। तो पॉलिसीज बनी हुई हैं, वो किताबों के लिए बहुत खूबसूरत है, बट ग्राउंड रियलिटी, द वे सर इज सेइंग, आई मीन नहीं, कुछ नहीं है। करेक्ट। वन थिंग आई शुड ऐड, जैसे प्रीति जी ने बोला, हम सब पेरेंट्स को फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि हम अपने बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे बच्चे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लाइक अदर डिसेबिलिटीज वो लोग अपनी बात कह सकते हैं, जी हमको अपने बच्चों के लिए एडवोकेसी करनी है। जी और करेक्ट। हर पेरेंट को ये एक्ट रखना चाहिए अपने पास, इसको पढ़ के, और स्टेट गवर्नमेंट को, अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट को अपना हक लेने के लिए एक्ट, हाँ, हक लेने के लिए अपना उसको सोशल सिक्योरिटी मिनिस्टर और कंसर्न सीएम्स को
इसको अवगत कराएं कि ये जगह पे ये खामियां हैं और इन खामियों को आपको दूर करना है। Right. जब तक हम करते रहेंगे, आई एम श्योर वन डे वी विल विन दिस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन। Right. अदरवाइज अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक हम एडवोकेसी नहीं करेंगे। आई टेल यू, जब ये एक्ट बना, पंजाब वॉज वन स्टेट वेयर आई अलोन वॉज विद द गवर्नमेंट। मैं वहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर हमारे पंजाब के थे, ही इज रिटायर्ड नाउ, मैं उनके पीछे लग गया और विद इन 3 months ऑफ द एक्ट वी गॉट अ from High Court Punjab, Haryana High Court, we got the orders issued by the registrar. हमारे स्पेशल कोर्ट्स बन गए ओके। और रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट का रजिस्ट्रार बन मिल गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट हो गए। सो ये सारे काम तभी हो सकते हैं अगर दोनों तरफ से, एक परस्यूअल और एक इम्प्लीमेंटेशन वाले, दोनों की नीयत अच्छी हो तो हम ये काम कर सकते हैं। राइट। तो सभी पेरेंट्स को, सभी, इवन ऑल डिसेबिलिटीज, ऐसा नहीं कि सारी, जब बाकी डिसेबिलिटीज उनके भी, हाँ, हमारे को उनका भी साथ चाहिए और सब लोग मिलके अगर हम लड़ाई करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी कि हम इसका संविधान निकालने पाए। ट्रू। ट्रू। और सर, जैसे कि इस एक्ट में रिजर्वेशन दिया गया है 4% का फॉर दीज पीपल, और उनको वैकेंसीज डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी मिलनी चाहिए, बट क्या वो एक्चुअली में उनको मिल रही है? क्या वो जो कोटा रिजर्व्ड है वो उनके लिए एप्लीकेबल हो पा रहा है एक्चुअली में? अगर हो पाता तो प्रीति जी को ये काम ना करना पड़ता। ये ये जो राइट। मदर्स, मैंने आगे भी एक दो केसेस पढ़े हैं, सम गुड गवर्नेंस और गुड वर्किंग, कुछ मदर्स गुड़गांव की, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए एक ग्रुप बना के और उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ये अगर सरकार के पास से हमको नौकरियां, हर डिपार्टमेंट में बैकलॉग्स, इतने बैकलॉग्स हैं, वेदर इट इज एजुकेशन डिपार्टमेंट, वेदर इट इज हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सब जगह हमारा डिसेबिलिटी का बैकलॉग है, वैकेंसीज हैं। राइट। बट एटलीस्ट अगर आप बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे रहे हो, पर डिसेबिलिटी सेक्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालो। मैं कल भी जब वहाँ हमारे स्टेट फंक्शन पे गया तो मैंने एक ही स्लिप दी अपने मिनिस्टर को कि आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम लेबर रख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हम, कॉन्ट्रैक्ट से तो हमारी रिजर्वेशन नहीं हल होती है ना। करेक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, जिसने वो काम लिया होगा, वो तो केवल अपने पैसे बनाने के, उसको उसने वही जॉब देनी है। ट्रू। सो 4% रिजर्वेशन है। अभी भी वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय हैं जो स्पेशली डिफेंस के बच्चों के स्कूल्स के लिए काम करता है, वहां राइट। पर स्पेशल एजुकेटर नहीं थे, and one mother took up this matter to the Supreme Court, and Supreme Court had given clear instructions that I give you 15 days time to start working on it, and within 1 month you should employ special educators in each and every school of the uh, Kendriya Vidyalaya. So राइट। why we should move every time to the court? अगर हम अपनी सरकार से अच्छी तरह काम लेना चाहते हैं, इवन there is CBSE and uh, our स्कूल बोर्ड्स, हर स्टेट में अपने अपने एजुकेशन बोर्ड्स हैं। ट्रू। पंजाब में एजुकेशन बोर्ड है, सीबीएसई, उन सब ने इस एक्ट के लिए, इस स्पेशल एजुकेटर्स के लिए बोला हुआ है कि
अगर किसी की शिकायत आ जाएगा, अगर कोई पब्लिक स्कूल है, अभी तो बहुत सारी चेन्स हैं स्कूल्स की, उनको बोला करेक्ट। हुआ है अगर आप स्पेशल एजुकेटर नहीं रखेंगे तो आपकी एफिलिएशन कैंसल हो जाएगी. इट इज क्लियर and this was done in 2017 by CBSE. Now it is 5 years gone, and I can still. Other day we had a our district level meeting where I specifically told my deputy commissioner, "Sir, kindly ask all the DOs to make inspections in the public schools, private schools, so that True. they can mark it down कि आपने स्पेशल एजुकेटर नहीं रखा है, and give them time कि I give you 10 days time, you start recruiting Uh, the special educators." yes. Right, right. So that is the initiative from the government side that these things should be there, but implementation is slow, very slow, I would say. Ma'am, how is your experience? Like your son is also working, and किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनका जॉब ढूंढने का? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंडर, जैसे कि अभी सर बता रहे थे, रिजर्वेशन है, बट क्या उसका कोई बेनिफिट आपको होता हुआ कहीं पे दिखा? So, Jitendra, God's been kind. So, I'll say first is this: God's been kind, that I was able to afford something for my son. There are so many parents who are not able to afford anything for their child. So I was that one blessed person जिसने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डाल सकी, और उस स्कूल में स्पेशल एजुकेशन के लिए सेंट डिपार्टमेंट था, बच्चा वहां पे पढ़ पाया और बच्चा वहां से करके कुछ आ पाया. But having said that, kai parents hai whose children they haven't even gone to school for that matter. They cannot Right, afford these kind of education. They're, supposedly these are big schools who hold big names on special education. कि ये बड़े बड़े स्कूल हैं, इनको एक तरीके का इनका ये यूएसपी बना के दिखाते हैं ये. बट राइटली सेड, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है. गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, इंस्पेक्शन आ रही है, चलो इसको लेके आ जाओ, इसका नाम फटाफट लिख लो, एटलीस्ट वो रिकॉर्ड में तो है, हाँ ये दिस पर्सन इज देयर. वो अपने right, आप को बचा रहे होते हैं, सो देयर हार्ट इज नॉट एट अ राइट प्लेस, but just to show that we are abiding by the law, so they will do it. So my journey wasn't easy as well. Even after I could afford his education in a good school, it wasn't easy. जब तक बच्चा स्कूल में है, अगेन इट्स अ वेरी सिक्योर्ड सेफ एनवायरनमेंट, बच्चा जा रहा है, पढ़ के आ रहा है, तो पेरेंट्स आर नॉट रियली बॉदर्ड. आई एम, बिकॉज टीचर्स हैं, एनआईओएस है, ओपन स्कूल से वो कर रहा है, वो सब हो पा रहा है. बट द रियल चैलेंज स्टार्ट्स व्हेन द चाइल्ड इज out of the school. That is what after 12th. correct, That's a huge gap and a huge challenge. आपकी अप्रोच है तो आपको एक आधी नौकरी मिल जाएगी, अगर आपकी अप्रोच नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर में बिठाओ. और वो पेरेंट्स सोचते हैं हम घर में बिठा के अब करें क्या. कोई उसको 8 क्लास में डाल देता है, क्लास भी नहीं होती है, घर में ही पेपर पेन पकड़ा देते हैं कि चल बच्चा तो कुछ तो कर, पेंटिंग ही कर ले, आजकल सबसे आसान चीज है, वो माय चाइल्ड कैन वर्क विद कलर्स. बट कुछ है ही नहीं करने को, तो वो बच्चा विल डू समथिंग ना, वो उसने कुछ तो करना है. So my correct. journey wasn't easy as well. My son, he has so many aspirations, so many aspirations. I used to feel so bad because he aspires to play football. I used to feel so bad. आप इमेजिन कीजिए, एक 24 साल का लड़का, चलो तब तो वो 20 साल का था जब वो असली में रोया था मेरे पास आंसू लेके कि मेरे लिए कोई फुटबॉल कोच क्यों नहीं हो सकता. Why can't I go and play with the normal people, so Right. called normal people? I had no answer. So बहुत challenges हैं, लेकिन इस challenge के दौरान चलो मेरी एक किसी के साथ पहचान थी, so उसको एक job मिल गई, and now he is working. But there are so many. This is one of its own case, but there are so many Yes. which are awaiting. करेक्ट, करेक्ट. वही सर भी अभी हाईलाइट कर रहे थे कि बहुत सारी वैकेंसीज आज भी खाली है, और जबकि बहुत कुछ many खाली है. people we have so many people who can easily accommodate these positions.
For बट that matter, इससे Jitendra, for that matter, Jitendra, अब जॉब वैकेंसीज हैं पर उन ऑर्गेनाइजेशंस को एक किसी तरीके से हेडेक लगता है करेक्ट, कि अच्छा हम अगर ले आएंगे तो इसके ऊपर भी हमें किसी को शैडो के लिए रखना पड़ेगा, कोई मेंटोरशिप रखनी पड़ेगी. सो दे टेक इट एज अ बर्डन कहीं ना कहीं. इवन इफ दे से दैट वी डोंट टेक इट, बट एज अ पेरेंट आई कैन से दे रियली टेक इट एज अ बर्डन. करेक्ट. तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर, इफ वी टॉक अबाउट द जॉब फॉर दीज पीपल? See, we have to uh, uh, work for empowerment, and for that, as per the Act, we should have vocational and skill training center, at least for intellectual disability. But Right. as far other disabilities are concerned, nowadays a lot of NGOs are working for the empowerment. So for intellectual disability, parents should we parents should go for a vocational training Right. or have at least each and every district, either the government should come up with vocational centers or parents should start vocational centers. Not only vocational centers, we should have, since our families are micro families nowadays, we should have residential uh, sort of projects for our, when we are not there, at least our children are in safe hands. So these Correct. are my two priorities which I am working for. करेक्ट. और इसी से मुझे भी एक छोटा सा ख्याल आया, जैसे लिज्जत पापड़ एक आज के डेट में बहुत बड़ा ब्रांड है, दैट स्टार्टेड विद फ्यू विमेंस. तो उसी तरह से एक कम्युनिटी में फॉर 5 to 10 किलोमीटर्स का एक रेडियस ले लें फॉर एन इंस्टांस, और वहां पे एक बीच में एक छोटा सा सेटअप बनाया जाए, काइंड ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे सर बता रहे थे, और उसी में उनको ट्रेनिंग दी जाए, वहीं उनको कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाए, सो दैट उनकी एबिलिटीज के हिसाब से वो कुछ भी काम कर सकें. जी. फॉरेन इंसान से अगर कोई पेंटिंग अच्छा करता है तो उसको पेंटिंग से रिलेटेड कोई काम कर दे दिया जाए, या कोई एम्ब्रॉयडरी अच्छा कर सकता है, या कोई किसी और तरह का काम अच्छा कर सकता है, तो उससे रिलेटेड छोटी छोटी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स वो बना सकें, और वो प्रोडक्ट्स जो एग्जीबिशंस हैं वहां सेल किए जाएं, सो दैट उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल रेट पे वो जा सके. मतलब अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है, सॉरी क्वालिटी अच्छी है, तो वो एक अच्छे प्राइस पे जाए, और उसका बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ दिस सेटअप, एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल टर्म्स में वहां जा सके, उनको सैलरी बच्चों को मिल सके जो ये काम कर सके. तो दीज टाइप ऑफ सेटअप कैन बी क्रिएटेड बाय पेरेंट्स, कैन बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव. तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं. जितेंद्र, ऐसा हो रहा है, ऐसे काफी खुले हुए हैं, बहुत हैं, पर वही है, मार्केट कहाँ है? In True. Kerala, there are around 200 self-help groups of self-advocates, ये देखो. Okay. and each group is of 20 children. Wonderful. सब ग्रुप्स, इतने सब ग्रुप्स बने होते हैं. हाँ, और one of the national awardees was from one NGO or self-help group was national awardee around 4 years back. They were the climate, the atmosphere, the things were that uh, it was like a forest type of village. They were having rabbits, and they used to breed rabbits and take out the fur and give it, because pashmina is banned, but you can sell the raw material. Right. So they were making huge money, and the children, no child was making less than 10,000 a month. This is, I'm talking about 4 years back when I read the story of those people. Right. Same way, there are groups who are having machines
making leaf plates, leaf glasses, leaf bowls. Number of such items are there. Each and every region has some of its own products. Like Punjab, abundant of potato is there. True. So lot of things can be made with potatoes. Right. And there are people, but not from our sector, who are doing it. And I wish to have some project with that. Even Great. one project which I am working right now is millet. Millet is a gluten-free product which is good for our children. Correct. So we are establishing a bakery for it. We will be going for cookies and biscuits. Okay. That's wonderful. So this way we parents can only think as Right. it is Right. already 70 years have gone. So far there is no social security in our country. I'm, That's true. I'm we people have been paying crores of rupees as the taxes, but what what have we got? Nothing. I'm at the age of 67, and believe me, how much will be my premium for the medical health? So, Should be around 50 to 60,000 at least. sir, around 80,000 rupees I'm paying. Oh, So it is a, a person with disability cannot expect to pay health insurance because we don't have any government health insurance for our disability sector. right. Which Right. There used to be around 5 years back. There used to be a policy Swabilamban, हाँ right. ये एक but होता that was abolished. We still have 1 lakh policy for Niramya health insurance for our intellectual disability. The rest of the disabilities, there is no health insurance. So these are the prime things which a government or the state government has to provide to our sector. You're right. Correct. That's right. Correct. And बिकॉज the जो most सब important. जो सब ग्रुप्स है ना वो हम अपनी ही छोटी सी एक कम्युनिटी के बारे में सोच लेते हैं। हम वो छोटी सी कम्युनिटी में फिर हम सोचते हैं अच्छा हम ऐसे भी कर लें, हम पेंटिंग्स भी लगा लें, हम आर्ट एग्जीबिशन लगा लें, बच्चा दिया पेंटिंग कर ले, हम दियास बेच लेते हैं। वो छोटी छोटी ही उसी उतनी में ही सीमित रहती है। So we can't Correct. expand till the Expand. time we have more hands, and that Right. also the powerful hands, we will not be able to expand. Very true. Because कई लोगों के लिए ना, I will not name the organization, but this is the fact, and this is like I have experienced it, that उनके लिए I call it, कई लोग ना बोलना नहीं चाहिए पर इस सेक्टर से they employ people just like a trophy. They want to show it like a trophy. Right. बोलना नहीं Right. चाहिए, but this is a नहीं fact. नहीं ठीक And है I've seen ये ये सच्चाई है हमारे ये हमारे बहुत सेक्टर बहुत खराब वाली सच्चाई है। Right. पर पेरेंट्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है ना क्योंकि पेरेंट्स भी इकट्ठे नहीं होते हम मैं आज भी कहता हूं कि हमको अपने बच्चों को चैरिटी नहीं समझना चाहिए। जी बिल्कुल। हमको दया नहीं मांग रहे हैं हम मांगते हैं उनका हक। उनका हक। Right. अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे कि सर ने अभी पॉइंट आउट किया था, पॉलिसी सेंट्रली जो बनी है वो सारे स्टेट्स में लेटर एंड स्पिरिट के साथ में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है या नहीं हो पाई है अभी तक। तो उसका खामियाजा जो है वो हमारे बच्चों को भुगतना जी पड़ रहा है, पेरेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। जी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसकी, एक तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे ये एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि स्टेट को वो अपने साथ कोलैबोरेट कर पाए प्रॉपरली। that's और right. पेरेंट्स को, जैसे सर ने हाईलाइट किया कि पेरेंट्स भी कोलैबोरेट नहीं होते हैं। अगर पैन इंडिया लेवल के पेरेंट्स एक ग्रुप बनाए, मेन ग्रुप, और उसमें कोलैबोरेट करें तो पॉसिबली उनकी आवाज ज्यादा बुलंद हो पाएगी। जी पर हम छोटी छोटी कम्युनिटीज में डिवाइड हो गए, 20 लोगों की, 25 लोगों की, 30 लोगों की। ये भी एक प्रॉब्लम है, वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की भी जरूरत है। राइट।
That's और right. सर मैम मैंने एक चीज और ये देखी है कि जब हम एसोसिएशंस की बात करते हैं या ग्रुप की बात करते हैं ना, तो हम बड़ा हॉराइजन ना रखते हुए एक छोटा हॉराइजन सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी या अपने आसपास का लेके चल लेते हैं, विच इज अ प्रॉब्लम। जब तक Right. हम बड़ा हॉराइजन लेके पैन इंडिया लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे सभी को, और सब एक True. प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म रहेंगे तो किसी की आवाज नहीं सुनी जाएगी। बट बिल्कुल, एक ही प्लेटफॉर्म होगा तो सबकी आवाज सुनी जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। पेरेंट्स का भी तो ये वे होता आप है ना, इधर सब इधर-उधर भागते हैं, वो अपनी ही छोटी-सी कम्युनिटी को छोड़ के फिर दूसरे में चले आते हैं फॉर सिंपल रीज़न उनको लगता है अच्छा शायद मेरे को उस कम्युनिटी में जाके ज़्यादा बेनिफिट मिले, शायद मेरे बेटे को करेक्ट। ज़्यादा एक्सेप्टेंस वहाँ मिले। तो इसीलिए पेरेंट्स भी it is not their fault, it is just that they are not able to understand कि हम करें तो करें क्या, and especially the major challenge lies is what after 12th and then what after me. These are करेक्ट। the two major challenges of every, correct me sir if I'm wrong, these are like as a parent अपॉलजी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं अभी बताता हूँ कि फॉर आवर चिल्ड्रन वी हैव स्पेशल ओलंपिक्स भारत। जी। ठीक है, पर एसओबी की जो लिमिटेशंस हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन और एथलीट्स विद स्पेशल नीड्स, हम उनको कोप अप नहीं कर पाते हैं, राइट। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल तो बहुत दूर की बात है। मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को देखा है जिन्होंने अभी स्पेशल स्पेशल ओलंपिक्स फॉर चिल्ड्रन, सीपी चिल्ड्रन बना लिया, एक फेडरेशन बना लिया। इसी तरह ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स ने स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर ऑटिस्टिक बना लिया। क्यों? हमें क्यों बनाने पड़ रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे बच्चों को उनका उनको जगह नहीं मिल पा रही है स्पेशल ओलंपिक्स में। राइट। सो जो हमारी जो पॉलिसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है पंजाब में। अदर स्टेट्स ऑल्सो, आई एम श्योर, 101% श्योर, देर इज नहीं है नो सर। स्पोर्ट्स पॉलिसी इन हरियाणा, देर इज नो स्पोर्ट्स पॉलिसी। स्पोर्ट पॉलिसी इज देयर, बट कहाँ तक वो कवर होती है? वो खाली जो सरकारी स्कूल हैं वो उसका ही, वो लोग ही उसका बेनिफिट या उसका फंडिंग का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जितने बाकी, क्योंकि पेरेंट्स इकट्ठे नहीं हैं। ट्रू। our need is the parents group should be there। अगर 50-50 लोगों का भी एक पेरेंट एसोसिएशन बनाओ, मैं कहता हूँ इतना मजबूत हमारा संगठन हो जाएगा कि हम अपने हकों के लिए बड़े आराम से विजय पालेंगे, उसको राइट। कॉन्कर You कर can लेंगे। voice राइट। it well. So with this we are moving on to the last question। जो अवेयरनेस लेवल है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी को लेके, अभी अभी भी मैं समझता हूँ काफी लो है। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पता ही नहीं है कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। तो ये जो गैप है इसको किस तरह से ब्रिज किया जा सकता है आपके लिए, दोनों के लिए ये क्वेश्चन है। तो पहले मैम यू वुड लाइक टू आंसर ऑन इट। ये गैप कम करने की कोशिश हो सकती है, ये गैप कभी खत्म नहीं होगा। ये हम कोशिश राइट। जरूर कर सकते हैं, वी कैन fill it because we all are walking talking awareness module in our own self। हम जिसको देखो हम जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं। तो जब अंगद मेरे साथ जाता है तो people do look at him, but somehow I will say even if they are looking at him, that means they are getting aware। जैसे भी उसको देख रहे हैं कि चलो कुछ तो अवेयर कर रहे हैं, वो पॉजिटिव अवेयरनेस जा रही है या नेगेटिव अवेयरनेस जाती है वो उनका है, लेकिन एटलीस्ट yes, the parents who used to keep their children inside now have become little more bold and they are taking them out। for simple एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको। कल डिसेबिलिटी डे था and I took this initiative not only because it was a disability day and it was a Saturday and up north we हमें सर्दी में बैठे हैं, so मौसम is very good।
So I just thought, okay, let me plan a picnic with my with Angad and friends. So we were all 13 of us, जिसके अंदर कुछ parents को भी मैंने involve किया कि चलो let's go to a have a picnic. वहाँ पे बच्चas were they had taken their football, they had taken their rackets and सब खेलने के लिए. There were people in that park who was looking at them because no two people are same, you know, and they were looking at them कि ये अच्छा बॉल भी ठीक से हिट नहीं कर पा रहा, अच्छा वो तो भाग के बॉल उठा के नहीं लेके आ पा रहा. But when they were looking at them, I felt our children were the most happiest over there because they were free of any kind of inhibition, free of any kind of thought. They were just loving it. जो बॉल जहां जा रही है जाने दो. वो दूसरे लोग हैं जो लोग अपने पिंजरे में फंसे पड़े. हमारे बच्चे पड़े. So they were in open. तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस अपने आप उस दूसरे लोग को पहुंची है that अच्छा they also enjoy their life. That's So great. it will कभी ये गैप खत्म नहीं होगा, but we can all work it this way. Correct, correct. मैं Sir, your आपको अपना views? मैं आपको एक छोटा सा अपना बताता हूँ. जब जी, कोविड आया और हमारे पीएम ने कोविड के लिए वैक्सीनेशन अनाउंस किया, so all the adults who were to be vaccinated, I took up the matter with the Minister of Health, our state, and I spoke to the Director Health Family Welfare कि हम अपने बच्चों को लाइनों में नहीं खड़ा करेंगे. अगर आपने देना है तो हमको स्पेशल कैंप से अलाउ करो. पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसको स्पेशल कैंप्स अलाउ हुए. right, लेटर ऑन जब 12 साल वाला या 16 साल वाला जो आया, दैट टाइम ऑल्सो आई गॉट द ऑर्डर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. और हमारे को देख के दिल्ली में किसी ने एक PIL डाल के ये स्पेशल कैंप्स लिए. हाँ जी, गुड़गांव में हुआ था. और इसको देख के महाराष्ट्र में भी लोगों ने इस पेटिशन डाल के अपना हक लिया. सो जी. पेरेंट्स जिन्होंने आज हमारी बात सुनी है, मैं सबसे बोलूंगा कि हम अपने बच्चों के लिए खुद काम करें. डोंट एक्सपेक्ट. हमसे बड़ी कौन सी NGO होगी. correct. We are the biggest organization. Yes. Yes. So हमको डिसेबिलिटी सेक्टर का जो हक है, हमारे पे दया नहीं करो भाई. हमको बेचारा मत बोलो. True. आप हमारा हक दे दो बस. Correct. ये Right 500 to की या education, right to employment बहुत जरूरी है. जहां सरकारें 300 रुपये 500 रुपये पेंशन दे रही हैं, वो सब इसको डिस्कार्ड करके नई पॉलिसियां बना के बच्चों को उनका बनता हक दे दो. Right. आप आई कैन टेल यू, जो लोग इनका ध्यान रखेंगे, इनकी दुआओं से ये देश बहुत तरक्की करेगा. जी. True. अगर हम सब बोलते हैं, हमारी हिंदू मैथोलॉजी कहती है कि आप अपना दसवंध जो निकालते हो, अपना अच्छा धन निकालते हो, अपनी कमाई का एक हिस्सा बांटते हो धर्मार्थ के काम के लिए, वो उसी काम से आप अपने इनकी पेंशन बना दो. Right. सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको 3,000 रुपया पेंशन कर दें या 5,000 कर दें. कुछ भी नहीं है. पर इनकी दुआओं से एक एक देश खुशहाली के मोड में जाएगा. आई कैन गारंटी दिस. ट्रू, वेरी ट्रू सर. और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राइट्स एक आम नागरिक को मिलते हैं वो सभी नागरिक को मिलने चाहिए, चाहे उनको डिसेबिलिटी हो या ना हो. और वो बेसिक राइट्स अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लिव हेल्दी लाइफ, हेल्थ बेनिफिट्स और शेल्टर, फूड, वो तो बेसिक नीड्स हैं ही, वो जो चाहिए फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. तो ये बेसिक चीजें हर किसी को मिलना चाहिए. और
ये जब हमारे देश में सभी को मिलना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली ना सिर्फ लोगों की कंडीशन बेहतर होगी, बट एक एनवायरनमेंट भी ओवरऑल अच्छा क्रिएट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हम सुनहरा देश बना पाएंगे इसको। ट्रू। बिल्कुल बना। हमें सो मौका दीजिए, बस हमें हाँ, मौके की हमको मौका दीजिए। हाँ, मौके की जरूरत यस है। यस यस, वेरी ट्रू। And with this positive note, we can create a better world for every Indian in India. So, on that note, we are closing our today's discussion. And I'm really thankful to Sir and Ma'am, both of you. You have shared your experiences, your learnings from the working and working with many people around you. So that was really wonderful. Thank you so very much for both of you, Thank you sir. so And much. thank you, Jitinder. Thank you so much. Thank you so Thank you, much. Preeti. Bye-bye. and thank you so much, everyone, for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and valuable insights about the subject. And hopefully, you would also share these things with your family, friends, colleagues, wherever there is a need. And that would be a great initiative from everybody. Thank you so very much, everyone, for watching and listening. Thank you. Take care and bye bye. Bye bye. Bye-bye.